So in the last session, we are just like we are just start about some basic of programming. Okay, still we are not into the C++ or any specific programming languages. We are just talking about how program work, why we need programming, and all the things. Okay, even in the today's session, what I will do, I will go with some basics more. So and after tomorrow or day after tomorrow, we'll start coding actually. See what approach I'm following. What I will do, first I will finish the theoretical concept. Okay, once we get the theory and all the things, so say there are some topic जो समझने के लिए theory important नहीं है, जिसको कोड के थ्रू अगर आप देखोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा. सो दोनों का मिक्स रखा है. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो थियोरेटिकली हमें ज़्यादा सही से समझ में आते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएंगे. सो दोनों की चीज़ों को हम लोग करेंगे. सो फर्स्ट वन, सी इट्स अगेन वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम. So I will take at least 3 to 4 days to complete this all the concept. Okay, so now we are ready to start. Okay, so let's start with the, see if you recall from the last session we are talking about variables, what is variable and all the things, and we discussed that variable is like it's a placeholder. Okay, जो आपकी वैल्यू को स्टोर करेगा. ओके, एंड इफ यू हैव अ वेरिएबल, ओके, in any programming language. Okay, so we are talking about C++ or Java actually. So what is the variable? Where we store the value, you can say, like it's a kind of placeholder. So in mathematics, see, if you are simple mathematics, if you think about the simple mathematics, okay, so let me select some bigger one. So if you think about a simple mathematics, if you have x equal to 2, that means what? We have one variable called x which have 2 basically. So in the mathematics, what we are doing, हम लोग इसको पेन और पेपर पे लिखते हैं. So see, and at the end इसको कौन रीड करने वाला है? ए इसे हम रीड करने वाले हैं. तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बेसिकली. Okay, as a student we know that x equal to 2 is what? There is one variable x and we are assigning the value 2 basically. We can understand it. But but if you think if you are going to give the instruction to your system that we have a variable x and that variable have some value 2, then we need to specify some properties for that variable basically. Like हमारा system समझे कि x का मतलब क्या है. So we need to tell that this x is a variable, so we need to give the name for that variable. So here name is x basically. You can give any name basically. So suppose if I have age equal to 13 here, 13. Okay, so age is a variable which contain a value basically. So this value basically is what kind of the value? It is a integer value. Okay, so in the programmatically, if you are going to do it in term of program, if you think, we need to tell all the basic details about this variable, like what is the name of the variable, what kind of the value they are going to store. Okay, and at the end if you are declaring age equal to 13, so this is going to be the integer. So there is a variable called integer which will store the integer value. This variable cannot store any other value, it will just store any integer value. Okay, and if you think behind the scene क्या होता होगा मेमोरी के अंदर, like memory के अंदर there will be a placeholder which name is here in the case of age, and this age variable will take some value basically. So ये जो box है इसको access करने के लिए what we need the address of this box, like we need the address of this variable. So we need a lot actually. So we started in the last session like basic of variables. So if you have a variable, that variable have some name, okay, address for that variable, what value they have, and apart from that they have something attribute. Okay, so in the attribute we are discussing like what will be the type of variable, what is the size. See, size is important. Okay, like we are going to store some value in that block actually. So if you think, so if you have 10 to 15 variable and each block is taking 2 byte, so if you are going to declare 10 variable
then your memory will take 20 byte to store that variable. So size is also important, and something called scope, and that is called lifetime. So scope, I think we discussed in the last session based on a global variable and local variable. We are discussing those things. So in this session, what I will do, I will just start with the basics. I will take 2 or 3 sessions to complete the basics. Once we done all of these things, we are going to start doing like we'll do some basic coding, and we will cover all the questions जो कि हमारे previous years में आए. So we are not just going to discuss the code, we are going to type those code in the editor, and we will see how the output, like everything we will see in the in kind of हम लोग इसको directly code के through देख सकते हैं. So my approach is very simple. First I will give you the what you can say, like खाना बनाना चाहते हो तो you need some ingredient. तो जो जो चीज़ हमें requirement है, we will give those things. Once we done like all the ingredient, we'll start cooking the food, like we'll start writing the code. So hope you can understand. So some of the concept is not for is not important for the exam, but this concept is important to understand the code. Okay, this is not important for to, like, if you don't know this thing you cannot pass the exam. Yeah, you can pass the exam, but at the end, if you want to read the code, if you want to understand the code, you need to be good in basics basically. So that is the main reason why I'm taking the session like this. Okay, so now let's discuss lifetime of a variable uh, in a memory. Okay, so how, first just don't read any theoretical things, because that is not for you for right now. Okay, see, if you think, if you just read it, like the simple English we are talking about, if you have a variables, okay, every variable take memory in your memory basically. So you want to understand, if I created one variable, so वो variable memory में कब तक रहेगा, like what will be the lifetime for the variable. So जो memory में मेरे रहेगी. So वह depend करता है कि आपका variable किस kind का है. अगर आपका वेरिएबल ग्लोबल है, सो जो वेरिएबल होगा, जब तक पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक वो आपके साथ बना रहेगा. लेकिन वह आपका लोकल वेरिएबल है, तो वह क्या होगा, जब तक फंक्शन रहेगा तब तक ही आपके साथ रहेगा. तो आई एम 100% श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट. डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एन एग्जांपल. Okay, so let me explain that example first, then I will come to this slide. Let's read this code first. Let me explain this code, then I will come to the idea. If you recall from the last session, we are discussing about that your main memory को हम लोग 3 different region में divide करते हैं. Some is called stack area, something is called heap area, and something is called code area. Okay, you can call it the data area also. Okay, so ये हमारा कोड है. ओके, सो थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक this is your bigger code actually. So I'm making it a box, you can think like that. It's a bigger code. So let's say this is your bus. Okay, and I'm using other color to give ki where is my driver. So yellow से मेरा driver दिखा रहा हूँ. So this is your sorry, just a minute, that is not correct. Okay, so this is going to be one function, that is a main, that is your driver basically. Inside the bus we have another function called f. Okay, so we have another function called g. So we have 3 different function. So ये जो bigger box आपको दिख रहा है, this is a complete program, let's call p1. This p1 have 3 different pieces, this yellow one, this blue one, and this color. Okay, but at the end, just think this is your bus basically. So if you have a bus, that is your program. If you have that program, will start executing from which line? That will start from the main. So that this is your driver actually. This is your driver basically. And this boxes you can call it. See, this is a passenger, you can call it. So passenger is kind of function, you can think. So this is a one function, this is another function. So this is a one program, this is a one complete program, and inside this program we have 3 function. We have 3 function. One is main function, one is f function, another is g function. We have 3 different function basically.
Okay, now let's start exploring each and everything. Okay, so you got the idea. So this is a one complete program, and inside this complete program we have three different method. One is main, one is f, and one is g basically. So at the end your code will start, your program execution will start with the main basically. So main will do everything because that is your driver, you can call it. So now let's start execute. So I'm going to delete all the boxes just for better understanding. So your code will start, see जो भी मेथड के अंदर लिखा है, so this is method body basically. So we are, क्योंकि हमारा कोड स्टार्ट होगा मेन से, तो जो मेथड के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, so this is a variable, this is a variable declaration you can call it. So ये जो वेरिएबल है, दिस इज अ फंक्शन के अंदर लिखा गया, मतलब किस फंक्शन के अंदर लिखा गया, मेन के अंदर लिखा गया. सो ये जो प्रॉपर्टी है या यू कह ले कि ये जो वेरिएबल है, ये इसके ऊपर हक किसका है, सिर्फ मेन का हक है. सो दिस इज समथिंग अ लोकल वेरिएबल. ओके, अब इस फंक्शन एफ के अंदर ये जो कहा ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसका है, एफ का है, तो ये उनका इंडिविजुअल है. सो वी आर कॉलिंग इट लोकल वेरिएबल. So main method cannot access this variable basically because this variable, it is only for this function. Similarly here, this is a variable, but this variable come under this function. So again this is a called local variable. But if you think about this red one, this is separated from all the functions actually. So that means what, it is open for all, like anyone can access. If main want to access this variable, he can access. If this function want to access, yes they can access. If this function want to access, yes they can access. Why? Because this is accessible for all, and this kind of the variable is basically your global variable. This is something called the global variable. So till now we are just understanding what is the local variable and what is the global variable. So local variable is like function के अंदर की जो properties है, यानी property just for understanding के लिए कह रहा हूँ, यानी function के अंदर का जो variable है, that is going to be a local variable. And ऐसा variable जिसके ऊपर सबका हक है, यानी खुला है, shared है, you can call it, that is going to be a global variable. Okay, so till now everything is clear. Now we are going to understand the code basically. Let's say we are going to start with the execution of the code. So we'll start with this point, main se. So first line is a x equal to 5. So we are going to see there is a x equal to 10. So your code is x equal to 10, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट होगा x का. So let's say ये हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं from this one. So I am writing the line basically. First this will execute 1, then this will execute. So line number 1 जब execute होगा, so in the memory एक variable create होगा, that name is x, and inside that we will fill the value 5. And then after first line execution, like this is done basically. Now second line will execute, that is he is calling someone, like this is some passenger you can call it. So this is calling, इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, यानी कि इस पैसेंजर को कॉल किया जा रहा है. तो ये कहां पर है, इसको ढूंढेगा, तो ये यहां पर है. देन ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. जब ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन नेक्स्ट का टर्न आएगा. टिल दैट नेक्स्ट का टर्न नहीं आएगा. देन अभी मैं यहां से स्टार्ट करूंगा. सो अभी 2 के बाद 2.1 विल बी हिज, 2.2 विल बी दिस, 2.3 विल बी दिस. ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब ये 3 का टर्न आएगा, लाइक दिस वन, अदरवाइज नहीं आएगा. लेट्स से तो 2.1 एग्जीक्यूट होगा, यानी दिस विल क्रिएट, मेमोरी में x क्रिएट हुआ, एंड दिस विल गोइंग टू बी द 10. ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, 2.2 एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है, दे आर अपडेटिंग दिस वैल्यू. सो वॉट एवर द वैल्यू हियर, दे आर अपडेटिंग इट प्लस 5, दैट इज ओवरऑल दे आर मेकिंग इट 10. सो यहाँ सॉरी ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी 15. सो यहाँ पे क्या हो गया, 15 हो गया. ओके, सो लेट मी अपडेट द वैल्यू with 5. This is going to be the 15 basically. And the next line they are printing on the display, like on your monitor or laptop, you got the 15 as the output. So this line executed, like all this 3 line executed basically. So when the function execution done, this entire variable is going to be vanish, गायब हो जाएगा. Like x की, see everything is done, this function is completely done, like all the line executed,
then the memory is going to be the flashed. Okay, like delete kar denge sab, you can say like that, like memory, sorry, this variable is going to be the flashed out from the memory. Okay, so if you are not getting, will come to the again. So what we can understand from this idea, so this is a variable basically. So ये जो variable का लाइफ टाइम है, ये जो वेरिएबल का लाइफ, दिस इज लोकल वेरिएबल बेसिकली. सो ये लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है तब तक ही मेमोरी में रहेगा जब तक फंक्शन रहेगा. अगर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, मतलब फंक्शन अपने सारे कोड को एग्जीक्यूट करके खत्म हो गया, तो उसके अंदर का जो वेरिएबल वगैरह रहेगा मेमोरी से भी फ्लैश आउट हो जाएंगे. वंस फंक्शन डन, variable is also going to be the flashed, everything is going to be the flashed, you can think like that. So इसलिए मैंने previous slide पे लिखा है, if you come to the previous one, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि if your variable is going to be the local, so जब तक function रहेगा तभी तक रहेगा. okay, जब तक function रहेगा तभी तक रहेगा. but if you think about this one, this is going to be throughout the program. What do you mean by throughout the program? How many line of code we have? If you think, first line this will execute, then this will execute 2.0, let's call it. Then after 2.0, your control will come to here actually. So this 2.1 will execute, 2.2 execute, 2.3 execute. Till this point, yes, this variable will be there. ये delete नहीं होगा. ये आपका रहेगा ही रहेगा. In some area of the memory actually. And after 2.3 execution, this function has been done, you can call it. Okay, that is a 2. A line execute, A line execute. Then 3.0 will come. Then 3.0 के बाद, because he is calling to this function, then we will come to 3.1. A line execute होगा, A line execute होगा, A line execute होगा, line by line. And then A भी done. So A भी function done. Main के अंदर तीनों line execute हो गए. Then all the function is been done. तो जब फंक्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया, लाइक सारे जो भी कोड के अंदर सब चीज सब के सब खत्म हो गए, तब जाकर ए भी वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो जाएगा. सो जो ग्लोबल वेरिएबल है, जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है, उसका लाइफ टाइम जो है डियर, उसका लाइफ टाइम यानी कब तक मेमोरी में रहेगा, वह तब तक मेमोरी में रहेगा जब तक आपके सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आपके मेमोरी में पड़ा रहेगा. तो इसलिए उसको हम एक अलग एरिया में रखते हैं ताकि वो पड़ा रहे. तो उसको हम लोग इस एरिया में रखते हैं बेसिकली. बाकी जो चीज आप लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हो सब वो आपके स्टैक एरिया में रहते हैं. तो स्टैक एरिया में क्या होता है, जैसे अब अगर आपको याद हो तो स्टैक करके हम डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे थे. वैल्यू आ रही आ रही, उसका काम खत्म, उसको निकाल के फेंकते जाओ. सो लाइक यू कैन कॉल इट, जो लोकल वेरिएबल्स आपके हैं वो स्टैक एरिया में रहेंगे. एंड दैट इज अ लाइक देयर इज अ लॉट्स ऑफ थियरी वी कैन गो, बट that things we don't require basically. So our job is to understand the कि variable का scope lifetime क्या हो सकता है. तो if your variable is a global, that variable is going to be the for lifetime, like through your program basically. जब तक आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, लाइक जितने भी फंक्शंस हैं मेन के, जितने भी लाइन ऑफ कोड हैं, जब तक पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं तब तक ग्लोबल वेरिएबल बना रहेगा आपके साथ. लेकिन लोकल वेरिएबल ऐसा नहीं है, पैसेंजर के जाते ही यानी फंक्शन के खत्म होते ही अपने आप की कहानी पूरी की पूरी खत्म कर लेगा. दैट इज ऑल अबाउट द लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम. इसके अलावा लोकल वेरिएबल के आगे अगर हम कुछ स्पेशल वर्ड जोड़ दें तो उसका लाइफ टाइम बढ़ सकता है. सो that is called storage class basically. So it's very hard to explain here. What I will do, I will take the example and then I will explain what is a storage class. So I'm not going to discuss each and one, like because these things we have studied in the 11th class. I don't know आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, but it's a C program concept basically. But I thought let's discuss it so that you can revise this thing again. So local variable का lifetime होगा within the functions, but global variable is going to be throughout the program. Once program will finish, your global variable is also going to be the flashed out. Okay, so local variable within the function, जब तक function रहेगा तब तक रहेगा. उसके अलावा it's also depend upon the storage class basically. So what is this? We are going to discuss it. But till now, just give me just reply me yes if you understood this point basically. Okay, good. जो थोड़े लेट ज्वाइन हुए हैं, डोंट वरी, वी हैव रिकॉर्डिंग्स, वी कैन गो विद. लाइक आपने 10-15 मिनट्स ही मिस किए होंगे बिकॉज सी इट्स वेरी इजी, लाइक यू कैन गो विद दोस थिंग. ओके, so we come to this idea. So now
This is important. This is again just one example. So don't be confused. मैंने ऐसे block बनाए थे just to see. Most of the people don't understand the code actually, and this is very common. Okay, see, it's a kind of coding is not something different thing. Okay, it's kind of story. Okay, like to be a good programmer, we need to read a lot of code. But before reading the code, we need to understand how to read the code basically. So if you think it's a bigger box, let's say it's a one program, you can call it one bus. So inside the bus we have two different functions basically. So one is a main function, other is a f function, you can call it. But everything will start from the main. Execution will start with the main basically. So what I'm going to explain with this piece of code, I am just explaining that if your variable is local variable, then the lifetime for that variable is going to be like जब तक फंक्शन रहेगा तब तक ही वो रहेगा, उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा. The this is like it's a good example. Let me explain you. Let's go with the line by line. So your code will start with main method. So first line this will execute. So this line will create a one variable. Let me write it here. It will create a variable x, and then they will fill with the 5. And the next line 2, let's say on the 2 line on the your monitor, like in your desktop or whatever the system you have, you are going to print 5. Okay, and the next line you are calling some function. Okay, you are calling some function, like you are calling someone. So inside this bus you have to search where is f. So you got the f. Okay, f is here. And then after, let's call this a 3, line number 3. So after 3 this line is going to be the execute, like function f is going to be called. So this is going to be the, let's call it 3.1, 3.2 and 3.3. So this is going to be the, so यहाँ पे क्या होगा. So let's call this x और ax दोनों different है. Ax इनकी property है, this is not your property. So let's come. So let's do like this. Let's say this is a bigger memory for f. Let's say, so in here what is going to 3.1 में क्या होगा, one variable will create it, name is x, and inside that you are putting 10. And then in the next line what you are doing, you are updating this value with addition of 5. So you are making it 15. And then in the next line what you are doing, you are printing it on the screen. That's it. All the line executed? Yes, all the line is executed. जब सभी line execute होगा उस function का, like ये function क्या हो गया, done. One function execution done, you will delete this thing. Everything is flashed out basically. Everything is a flashed out. So like ये खत्म हो गया. So this function return you, this return you 15 basically. And next line, what you're doing, you are making increment by 2 in this value. So you are making it 7. In the next line again you are calling the function. Sorry, you print कर लिया. So this is going to be the 4, this is going to be the 5. Let's say you are printing the value, then you will get 7 basically. Okay, again you are calling the function. So again in the stack something activation record बनते हैं. So we are not going to discuss those things, just understand. Again you are calling the f. So again this line will execute, like after this, let's say this 6. So this is going to be, let's say 6.1, 6.2, 6. Again this is going to be the call. Function को आप कई बार बुला सकते हो. Okay, एक पैसेंजर आपके बस में कई बार चढ़ सकता है. जरूरी नहीं है कि वो एक बार चढ़ा और उतरा तो वापस बस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. कितनी बार भी वो आपके पास आ सकता है. 6.1 में वापस से x एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसमें वापस से 10 से वैल्यू इनिशियलाइज होंगी. एंड देन इंक्रीमेंट किया आपने by 5, this is going to be the 15, and then this is going to be the print on the screen. So again this function is printing you 15. Okay, and again you are incrementing the value of x with 5. So you are going to increment with the 5, this is going to be the 12, and you are printing it on the screen. So you got the value basically, you got this value. So you got this value. You are thinking, okay sir, ये x की वैल्यू फ्लैश आउट हो जाएगी, मतलब x जो है ना फ्लैश आउट हो जाएगा, बिकॉज so this function, this f return you 15. So you are thinking, okay x की वैल्यू अगर डिलीट नहीं होती, यानी f क्या करता, अगर f था तो लास्ट टाइम उसने क्या किया था, 15 बना के रखा था, इसको डिलीट कर दिया, इसलिए वापस से अगर आपने इसको कॉल किया तो उसको वापस से 10 से इनिशियलाइज करना पड़ा और उसको वापस 15 उसने मुझे सेंड किया. वी डोंट वांट दैट थिंग्स. ओके, हमें नहीं चाहिए एक्चुअली. हम चाहिए कि 15 अगर पहली बार में आया था तो सेकंड टाइम मुझे 20 आना चाहिए था, क्योंकि कोड देके क्या लग रहा है कि अगर मैं इसको 2 बार कॉल करूंगा तो अगर पहली बार में हुआ 10
अगर पहली बार में उसने 15 भेजा था, मुझे रिटर्न किया था, दूसरी बार में 20 देना चाहिए। अगर मैं इस फंक्शन को एक बार और बुलाऊं और कॉल करूं तो 25 देना चाहिए। एक बार और लिखूं तो मुझे 25 30 देना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो उसमें वेरिएबल आपने लिखा है, एक्स की वैल्यू है जो, वह एक लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है फंक्शन तक ही रहेगा। फंक्शन की पूरी लाइन खत्म हो गई तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को मेमोरी में से डिलीट कर दिया जाता है। ओके, समझा? So we can grab this point from this example basically. So no need to remember anything, just try to understand. This thing will help you to read the code, to understand the code. Okay, this is not important for the exam first of thing, but this is most important, at least if you are if you are going to write your own code, or you are going to read your theory textbook basically. Till this point everything is clear? Okay, good. This is a very great example by which you can understand like storage class and all the thing. Let's say this yellow or green is what you can call it. This is a one bigger code. This is a one simple code. This is a one program. So every program will start with the main basically. So this is the first line. So what you are calling a function here. So this is, let's call this is stack basically. Okay, जहाँ पे यह फंक्शन आपने फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया, सो आफ्टर 1 दिस लाइन विल एग्जीक्यूट, लाइक 2 3 दिस लाइन विल एग्जीक्यूट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू टिक, so because a line execute hoga, this is x will declare, this is going to be the fine. Next line is what you are incrementing with this one. Okay, and then you are printing the value. So this red one, like this function is printing you 6 basically, and now all the line is executed. This stack is going to be the delete. Why delete? Because this is a function का पूरा लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है, so everything is done. So ये फंक्शन पूरा का पूरा डिलीट हो गया. So you got the point. आपने सेकंड लाइन में वापस से क्या किया, लेट्स कॉल इट 5, लेट्स कॉल इट 5. आपने वापस से फंक्शन को कॉल कर लिया. अगेन क्या होगा, एक स्टैक बनेगा, एंड अगेन से 6 7 एंड 8 ए लाइन एग्जीक्यूट होगी. तो अगेन क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, एंड नेक्स्ट 6 आया, एंड देन प्रिंट किया. ए बी फंक्शन आपको क्या रिटर्न दिया, 6. सी ऑल द कोड एग्जीक्यूटेड, दिस इज गोइंग टू बी द डिलीट. व्हाई? बिकॉज जो वेरिएबल है दिस इज अ लोकल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल क्या कहता है, जब फंक्शन खत्म तब मैं भी खत्म. इट्स लाइक दैट. ओके, एंड नाउ अगेन लेट्स से दिस इज 8, लेट्स कॉल दिस इज 9. 9 टाइम ये कॉल होगा. 9 के बाद 9 ने अगेन फंक्शन कॉल किया, तो 10 में ए लाइन एग्जीक्यूट होगा, 11 में ए लाइन एग्जीक्यूट होगा, 12 में ए लाइन एग्जीक्यूट होगा. सो अगेन एक स्टैक बनेगा, और देयर विल बी x, एंड इनसाइड दैट यू विल पुट 5 एंड इट्स गोइंग टू बी 6. सो अगेन यू आर गोइंग 6. सो एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, वी आर थिंकिंग ओके सर, फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया तो ए मुझे 6 दिया, दैट इज ओके, बट नेक्स्ट टाइम कॉल किया तो 6 + 1 7 देना चाहिए था, बिकॉज अर्लियर ही रिटर्न मी 6 बेसिकली, बट अगेन आई एम गेटिंग 6 and 6. Why? You can reply is very easily, like you can reply that see my see, if you read this function basically, inside the function we have a variable that is a local variable, and local variable is working like that. जब वो क्या होगा, जब आपका जो फंक्शन बॉडी खत्म होगा, यानी सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो अपने आप प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देगा. नेक्स्ट टाइम आप उसको वापस कॉल करोगे तो वो वापस से क्रिएट करेगा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट जहां से उसको लिखा गया है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम बेसिकली, because as a developer we are thinking okay, if we are going to call this function 10 times, then we need to we are going to return some other value, because we need those things, but again and again we are getting the same value. So that is a problem. So can we solve this problem? Yeah, we can solve this problem. It's very easy. Okay, see what is happening. So this is not important for board exam basically, but if you think, so whatever till now everything जो variable आप कर, जो local variable that is creating in the stack area basically. So stack area कैसे काम कर रहा है basically, कि जब एक बार फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो सपोज करो इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक रिकॉर्ड बनेगा, तो ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो स्टैक को डिलीट कर देंगे हम लोग. वी डोंट वांट दिस थिंग बेसिकली. वी वांट कि ये जो x है ना, इसको एक सेपरेट स्पेस दिया जाए, और एवरी टाइम वह अपडेट हो थ्रू आउट द प्रोग्राम. जब तक प्रोग्राम ना खत्म हो तब तक ये खत्म नहीं होना चाहिए वेरिएबल, तब तक वो अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल क्या है ना, आपका स्टैक एरिया में स्टोर नहीं होता है, वो आपका कोड एरिया में स्टोर होता है.
तो सेपरेटली वह रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक पूरे कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे. So in this case, okay, where is, in this case, if we can add some special keyword basically here, okay, I think I lost my connection.